का corporate experience है मेरा. So I'm a chartered accountant, London School of Economics graduate, a PwC. उसके बाद मैंने UK में तकरीबन over a decade काम किया UK telco sector में finance and commercial roles. फिर मैं पाकिस्तान वापस आया. In पाकिस्तान में I started the innovation function, innovation transformation at ICI. So ICI में I was part of the strategy team and the innovation lead. And then I was in a B2B commercial team there. So B2B commercial head था वहाँ पे chemicals में और executive team का हिस्सा था at ICI. उसके बाद I joined this local FMCG organization called Santex, female hygiene में है, butterfly sanitary napkins. So I was the chief commercial officer there with a team of over 600 reporting to me. So throughout corporate experience रहा है मेरा, finance and commercial roles, बीच में HR भी head किया है. I've had supply chain reporting to me as well, right? मेरा AI से exposure हुआ था when I was at Sky in the UK back in 2016, 17, 18, much ahead of the time. उस time पे I got to work with machine learning PhDs and मुख्तलिफ AI की applications in business का मौका मिला उस वक्त. And I got to see कि क्या challenges आते हैं and how you overcome those and how you come up with the right solutions with the technical team. फिर जब 2022 के end पे ChatGPT आया, तो I went all in because I understood that this is going to be a game changer. And obviously बहुत कुछ change होने वाला है. So I completely went all in and been using it left, right and center in a corporate environment myself, being at C-suite position, अपनी teams को enable किया. And about 3-4 months ago, I've decided to step away from my corporate career and अपने काम कुछ start किए हैं. So उनमें मेरा main focus है इस time पे AI पे. I'm trying to become a one-stop shop for organizations, जहाँ पे I'm helping them with consulting, solutions, and of course training and capacity building as well, right, on the AI front. और उसके अलावा obviously there's a separate training organization as well, and I work closely with PSTD. I'm on their panel as well. And that's a bit about myself. In the last 3-4 months, alhamdulillah, given my background, which is बहुत ज़्यादा corporate world can relate to because I've been on the other side all my life. तो बहुत leading organizations के साथ मेरी engagements already हो चुकी हैं, which has been Pakistan Cables, Tripack Films from Packages Group, LCI, उनके finance की पूरे CFO and all his team, Burke Corporation, the Chawlas, etc. Right? And wherever I've done these sessions, एक चीज उन sessions से निकल के आ रही है, and I think आप सब भी generally उससे relate करेंगे कि AI के बारे में बातचीत बहुत हुई है, लेकिन everyone is struggling to build that momentum, right? कि करें क्या, मतलब at an individual level and at an organizational level, वो culture किस तरह build करें, momentum किस तरह build करें, and that's where I'm trying to help organizations and individuals उस barrier को break करें. And what we end up doing is that obviously when we spend some time together, your way of working, and this is a feedback that I really like as well, कि I try and change the way of working for entire teams after spending that day or time together, because the main point is आपके pain points जो अपने काम में है, it's about understanding them and telling you what tool or what approach is the right approach for that, right? So that's where I come in. देखिए, AI is here and I don't think we need to spend too much time on this. ये तो अब acceptable है. आज से 6 months पहले maybe थोड़ा सा convince करने की जरूरत थी कि this is the time for AI पाकिस्तान में, but I think it is hitting everywhere, left, right and center. हमारी social media feeds चाहे हो या हमारी organization में discussions हो, everyone is saying कि यार we've got to start. Where people are struggling is how to start, and that's what this is going to be about, right? It's about giving a structure to your AI journey for your organization. Okay, ये कुछ numbers हैं, and I want each one of you to focus on these numbers because these will have a major impact on your own lives and your family's lives as well in the times to come. West से जो numbers आ रहे हैं statistics, more than 75% organizations have implemented AI, and more than 2/3 of the individuals are regularly using AI. Pakistan में we are only scratching the surface right now. जो generally I've engaged with over 1,000 people by now in the last 3-4 months across more than 10 organizations. And what's happening is most people on a scale of 1 to 10 are on a 1 or a 2. And जो समझते भी हैं, मैं एक workshop अभी recently करवाई थी, it was for the HR fraternity,
तो मैंने वर्कशॉप से पहले पूछा कि यार वेयर डू यू थिंक यू आर स्टैंडिंग ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? तो 5, 6, 7 मैंने बोला चलो इंशाल्लाह सीखेंगे फिर बहुत ज़्यादा. बट एसेंशियली व्हाट्स हैपनिंग इज पीपल डोंट इवन नो व्हाट दे डोंट नो. दैट इज द डिफरेंस. आपका अभी पूरा एक्सपोजर ही उस पर नहीं हो पा रहा है इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज आउट देयर. ओके, अच्छा, दीज 4 numbers आई थिंक ये बहुत खतरनाक नंबर्स हैं एंड यू गॉट टू थिंक अबाउट दिस. 300 million jobs could be lost globally, will be lost globally due to AI in the coming few years. And 170 million will be created. जब भी ऐसी कोई revolution आती है, like the industrial revolution and various other revolutions, तो job displacement होती है, and it is replaced with new jobs. लेकिन जो खतरनाक चीज है, that's the pace at which it is happening right now, that is unprecedented. मेरी अपने जिन दोस्तों से UK में बात हो रही है, for example, they're saying कि graduate jobs shrink होती जा रही है because organizations are saying कि ये काम तो हम AI से करवा लेंगे. Why do we need these junior resources? So obviously the impact of that would be the whole organizational structure would get messed up. जब junior एक pyramid बनता है and obviously then people go up the ranks. इसी तरह आपके back office functions, call centers, BPOs, etc. Right? Middle East में I found out about this organization जिन्होंने अपना पूरा content management, social media management को replace कर दिया with an agentic AI solution. Manager भी AI और LinkedIn specialist भी AI, Instagram specialist भी AI और Facebook specialist भी AI, right? तो अब जब ये हो रहा है तो मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी होगी not to fully understand what's happening and not to embrace it, basically, right? 40%, 375 million people will change their careers in the next few years. ठीक है? I've been early to the game, obviously, but I know बहुत सारे लोग, obviously, this change of careers will happen, and this is the scary number, यार. 40% employers are planning workforce reductions in the West. आपके पास आए दिन एक major wave of layoffs आता है, and they actually related to AI as well in the announcements as well. फिर थोड़ा backfire हुआ तो they've stopped quoting AI. But obviously AI is behind a lot of these massive layoffs that are coming. So the important point is, मेरी request आप सबसे ये है that in your own work, एक चीज आप ये समझ लें कि पाकिस्तान में भी many leaders, C-suites, business owners, directors, जैसे जैसे उनका अपना exposure AI से होता जा रहा है, they will not be hiring people in the future who are not AI enabled. So I myself, in my new organization, I think it will be an absolute critical for someone to be AI familiar to a certain extent, वरना मैं नहीं hire करूँगा. And obviously जितनी मेरी बातचीत हो रही है मुख्तलिफ organizations में business owners से, even Seth हज़रात in their 70s, 80s, 90s, जैसे जैसे उनका AI से exposure हो रहा है वो कह रहे हैं यार this is the way forward and they will not look beyond that. So I would request for the sake of your own careers, for your families, please make sure that you go full on. You go all in for your AI adoption right now. Right now is the time. HR के अंदर अगर हम बात करते हैं, obviously because there's an HR fraternity here, so 75% of HR leaders are saying कि AI will be critical to success in 1 to 2 years. पाकिस्तान में I do agree कि हम इससे पीछे हैं. ये statistics West की हैं. 80% of enterprises are already using AI in at least one of their functions. और इस तरह के बेइंतहा numbers हैं. And obviously they are being able to achieve a lot of bottom line impact as well from that. इससे जो है bottom line savings आ रही हैं. So it is coming and it's coming for every function. Okay, there's no two ways about it. Obviously इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं, मैं बात करूंगा कि किस किस्म के solutions हैं. Some of them are simple like your chat GPTs and Geminis, and then obviously there are things which are a lot more complex, and we'll talk about that. But before we go to that, एक चीज है जो मैं AI adopt तो करना है लेकिन ऐसे मत कीजिएगा. ये देख लेते हैं. Voice. But this is not only 100% run by artificial intelligence. AI actually does that because the CEO one day makes a go to the ChatGPT service how to make company successful. ChatGPT says go to research. He copies that, pastes it into my chat. So do competitor. I copy that and put it in ChatGPT. I do competitors. ChatGPT do competitors.
about it, my boss is saying, the boss puts it in the activity, says, review, comment in the he gets response, he said to me, saying, sir, make these changes. Obviously, so this goes on. We got human intelligence, you know, तो भाई मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एआई अडॉप्ट जरूर करें, बट मेक श्योर कि इस तरह ना करें. ऑब्वियसली यू गॉट टू यूज एआई एज अ हेल्पर, एज एन एनेबलर, एज एन ऑगमेंटर, राइट. मेक श्योर कि एआई आप खुद एआई से अपने आप को रिप्लेस ना करें, वरना वाकई वो आपको रिप्लेस कर देगा. तो लेट्स बी कॉन्शियस ऑफ दैट. वन ऑफ द बिगेस्ट स्किल्स वी हैव as humans is a critical thinking skill, and make sure that we don't let go of that. That is where we'll stand out and continue to stand out, basically, right? अच्छा, एक चीज जब मैंने अपनी ये AI की push start किया, तो मेरी कुछ लोगों से discussions हुई on this, and I picked it up very early on. Not enough people are talking about the risks of AI, ठीक है? And I think this is very, very important. It's equally important. AI की opportunities बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन risks भी बहुत सारे हैं. And let's talk a bit about those. This is something which I feel very strongly about, and I'm trying to counter the narrative. जब AI का push पाकिस्तान में आ रहा है, तो I'm trying to make sure that we do counter the narrative. सबसे पहले organizational level पे बात कर लेते हैं, because you're here from your representing your organizations here. No clear policy means confusion. ठीक है? This is the same learning that's coming out of the Western playbooks of AI implementation as well. Let's not repeat the same mistakes. Let's not reinvent the wheel. ये गलतियां वेस्ट में हो चुकी हैं पिछले 2-3 साल में, जब से जनरेटिव एआई की अडॉप्शन आई. मैं आपको लोकल एग्जांपल देता हूं, इसकी 2 एग्जांपल्स. एक पहली एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का सेंसिटिव एचआर पॉलिसीज आर अवेलेबल ऑन द एआई क्लाउड. रीजन फॉर दैट बीइंग बिकॉज ऑब्वियसली दिस वाज नॉट कवर्ड, एंड ऑब्वियसली देखिए हम सब एक चीज के जिम्मेदार हैं. वी ऑल मेक दिस मिस्टेक एज वेल, दैट जब कोई इवन सोशल मीडिया ले लें, व्हेन समवन टॉक्स टू यू बहुत अच्छे से, तो यू स्टार्ट ट्रस्टिंग देम एज इफ दे आर सेइंग एवरीथिंग राइट एज वेल, व्हिच इज नॉट ट्रू, व्हिच इज नॉट ऑलवेज ट्रू. यही गलती लोग कर रहे हैं with their AI models as well. Just because the AI models are giving a very structured response and a very thought out response, and the way it talks is very well articulated, लोग उसको ट्रस्ट करने लग जाते हैं, कुछ कम और कुछ ज्यादा. ठीक है? तो ये गलती पाकिस्तान में भी होगी, एंड हर ऑर्गेनाइजेशन में होगी जो कि इस पे प्रोएक्टिवली स्टेप नहीं लेते, where they sort of go out. And what people are now doing is, after some of my sessions, at least step 1, and maybe you can go away and do this as well, get an email out talking about certain broad principles about responsible AI usage. पॉलिसी बनती रहेगी, आपकी आईटी टीम टाइम लगाएगी, महीने लगाएगी, वो बात की बात है. एटलीस्ट पुट द ओनस बैक ऑन द एम्प्लॉइज. उनको ये अवेयर तो कर दें कि यार ये एलिमेंट सोचो बिफोर एक्सपोजिंग सेंसिटिव कंपनी डेटा, कस्टमर डेटा, फाइनेंशियल डेटा टू द एआई मॉडल्स एसेंशियली, राइट. एक और एग्जांपल, सो इनएक्यूरेट आउटपुट्स की हम बात करते हैं. सो यू नो हेलुसिनेशन का पता है आप लोगों को? हेलुसिनेशंस इज व्हेन एआई मेक्स थिंग्स अप. ये उसकी फितरत में शामिल है. बाय द वे, मे आई ऐड दिस हियर, इट्स बीन मेड इन अ वे कि वो डेढ़ होशियार बन के जवाब दे देगा whether it knows it or not, right? That's how it's been built. So what happens is कि लोग उसको ट्रस्ट करने लगते हैं, and with ChatGPT 4 only about I'd say 2 महीने पहले तक 30% hallucination rates थे, which means it's making things up left, right and center. ठीक है? जो आपकी फील्ड से रिलेटेड होता है वो आप समझ जाते हैं. हम सब ने वो केसेस देखे हैं जहां पे हम उससे कहते हैं you're wrong, और या तो वो बहस करता है फिर सॉरी कर लेता है इवेंचुअली. बट डू वी कीप दैट सेम रेडार ऑन जब हम दूसरी चीजों पे भी फोकस कर रहे होते हैं, राइट? अपनी फील्ड में तो वी आर ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ एक्सपर्ट्स. सो व्हाट हैपेंड वाज, अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कि एक टेक्सटाइल मशीन मैन्युफैक्चरर है, उसने बताया कि एक लार्ज टेक्सटाइल प्लेयर से उसको एक बड़ा क्लेम आ गया कि आपकी मशीन इंस्टॉल हुई थी, मेरा बैच खराब हो गया कपड़ों का. उसकी मशीन थी मिक्सिंग डोजिंग की. वो गए, उन्होंने 2 दिन तक पूरा रन किया अपना टेस्ट, ऑल सॉर्ट ऑफ टेस्ट, एवरीथिंग केम आउट परफेक्टली. उस दौरान उसने एक बंदे को देखा थोड़ा मशकूक एक्ट कर रहा था. सो ही टोल्ड देम कि यार इसकी जरा इन्वेस्टिगेशन करो, समथिंग डजंट सीम राइट.
एंड व्हाट टर्न्ड आउट वाज कि वो भाई मिक्सिंग का काम था उनका, केमिकल्स का, डाइस का। उन्होंने चैट जीपीटी पे इतना रिलाई कर लिया था दैट ही डिड नॉट लुक एट द टेक्निकल डेटा शीट, एंड उन्होंने चैट जीपीटी से पूछ के मिक्स कर दिया द क्वांटिटी। पूरा बैच खराब हो गया, वो बंदा फायर हुआ ऑब्वियसली। बट माय पॉइंट टू द ऑर्गेनाइजेशंस इज कि यार ये तो होगा, ये गलती वेस्ट में हो रही है पिछले 2-3 साल से। सो प्लीज मेक श्योर यू अवॉइड दैट, यू मेक। देखिए, व्हेन यू जॉइन गुड ऑर्गेनाइजेशंस, एक चीज होती है जहां पे आपके वैल्यूज एंड एथिक्स रिलेटेड आपसे चीजें साइन करवाई जाती हैं। क्या वो नो ब्रेनर्स नहीं होती वो चीजें, सम ऑफ दोस थिंग्स, बट स्टिल दे आर पुट इन फ्रंट ऑफ अस and we are made to sign and say we comply, right? That's what I'm recommending to do in the case of risks related to AI as well. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, so sensitive data exposure की बात हो गई। Obviously be very careful, चाहे personal level पे हो चाहे corporate level पे हो। and इसमें one of the problems that is happening is कि not enough people in Pakistan are aware of the data privacy and the data compliance side of things। साथ में नॉट इनफ पीपल आर पेइंग फॉर देयर मॉडल्स। आप में से कितने लोग हैं जो अपनी जेब से 5,700 रुपए पे करके खरीदेंगे? 2-3 लोग हैं, राइट? अच्छी बात है, बाकी नहीं है। अवाम विल नॉट बी पेइंग। सो व्हाट विल हैपन इज कि उनका एक फ्री मॉडल रन आउट करेगा, वो अपने दोस्त से पूछेंगे यार वो टाइम प्रेशर है, एनालिसिस करना है, यार इस चीज को समराइज करवाना है, वो कहेगा फला मॉडल यूज करो। पीपल गो टू दैट विदाउट चेकिंग एनीथिंग अबाउट द पॉलिसीज in terms of data retention, right? And then what happens is obviously your data will get exposed, your individual sensitive data and your organizational sensitive data. So it's really important to at least have some policies around this. Aapke paid models pe versus free models, there's a difference of data privacy controls that are being offered. So be aware of that. As you allow or disallow models, there should be some method to the madness here, right? In terms of, and don't just leave it to your IT. As HR fraternity here as well, my request is, because देखें जब बंदा फायर होने जाता है तो वो आपके पास चीज आती है, okay? And it's not easy, and especially when it's happening जहां आप कह रहे हैं यार उसको अवेयरनेस ही नहीं थी। ये केसेस आएंगे जहां लोग कहेंगे sorry we didn't think of it this way, so what call do you take? So the onus is on the organizations as well as individuals to be very careful about sensitive data exposure. Late adoption का equals missed edge, ये तो obvious है, चाहे आप individuals हैं चाहे आप organizations हैं। If you're not adopting AI, you're going to get left behind, okay? As far as individuals are concerned, एक और बहुत important point है over dependence का, and I would like to highlight this. MIT की एक research आई थी about Ivy League graduates, Ivy League जो उनके top university graduates हैं। I don't know if any one of you have come across it or not. Basically they were given a very heavy exposure to AI and then AI ले लिया गया उनसे, and उनका level of output for basic tasks went below high school level, okay? Because आपका जो दिमाग है, it's a muscle, your brain is a muscle। अगर उसको यूज नहीं करेंगे तो obviously माऊफ हो जाएगा, and that's what you shouldn't do। So even when you're using AI as well, my recommendation, I use AI सुबह से रात तक for a lot of different things, but I'm very conscious कि मुझे ये पता है कि कौन सी चीजें मैंने डेलीगेट करनी है AI को और कौन सी चीजें मैंने खुद करनी है। सो मेक श्योर लाइक वी डू विद अ न्यू टीम मेंबर हु जॉइन्स अ टीम, कुछ चीजें उनको हम डेलीगेट करते हैं जो कि लो वैल्यू टास्क्स होते हैं, एंड देन वी ऑब्वियसली कीप गोइंग अप। सो मेक श्योर कि आप अपने माइंड की क्रिटिकल थिंकिंग वाला एलिमेंट लूज ना करें। आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस इनफ, राइट? एंड रिसर्च इज प्रूविंग दैट। सोसाइटी के रिस्क की अगर हम बात करते हैं तो जॉब रोल डिस्ट्रप्शंस की हमने बात कर ली, आई थिंक दैट्स कमिंग। बायस इन डिसीजन मेकिंग, नॉट मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ दिस बाय द वे। जब दिस वन कंपनी, वेरी लार्ज ग्रुप इन पाकिस्तान, वो कह रहे थे यार हमारे जो सेठ साहब हैं वो तो अब प्रमोशंस भी एआई से पूछ के कर रहे हैं लोगों की, ओके? नाउ द पॉइंट इज कि ऑब्वियसली आई होप अल्लाह खैर करे उस ग्रुप का एंड हाउ थिंग्स विल वर्क आउट, बट माय पॉइंट इज लेट्स से कि आप लोग एचआर में इंटरव्यूइंग के लिए, फर्स्ट राउंड शॉर्टलिस्टिंग के लिए आप कोई सोल्यूशन लेते हैं, हैव यू टेस्टेड इट जस्ट बिकॉज इट्स सुपर फ्लैशी, राइट? हैव यू टेस्टेड इट कि उसके अंदर कोई बायसेस तो बिल्ट इन नहीं है? यू नो हाउ यू टेस्ट योर ओन टीम्स, जब आप उनको बिफोर लेटिंग देम आउट ऑन देयर ओन, यू डू मेक श्योर कि यू ट्रेन देम, बिकॉज बहुत सारे प्रेजुडिसेस होते हैं, बायसेस होते हैं। व्हाट इफ
किसी एक रोल में आपकी कंपनी में, where language is maybe not the biggest weight, but maybe it treats language as having the biggest weight. So you will lose good talent in the screening process because you're not aware of the biases built into the model. So please be aware of this. This is something very important. Last चीज है जी deep fakes. Deep fakes सबको पता है क्या है? Deep fakes पता है? Deep fakes is essentially जो very real looking fakes, right? So basically अब within a minute आप समझे मैं गया हुआ हूं कॉनेक्स लाहौर where I was speaking, किसी ने फोटो ली और किसी ने भेज दिया कि यार फहद भाई जो लाहौर नहीं गए ये बीच पे बैठे हुए. This can be done in a minute, literally a minute with a free software, okay? And then उसको वीडियो बना दिया आपने basically, right? Another 2-3 minutes basically. So my point is, deep fakes are here. Deep fakes हम सबके हाथों में है. We have access to that. Obviously, I won't teach that right now, but my point is कि deep fakes को when I talk about responsible AI adoption, एक बहुत important point है जो आप सबको aware होना चाहिए, that these will start affecting society and families in a variety of ways. I was talking about this to एक मेरे religious teacher है, I was talking to him about it. He said, यार आप सही कह रहे हो, ये मेरे साथ अभी हुआ है. And I said, क्या हुआ हज़रत? He's like, essentially, my missus for 2-3 days वो मुझे बड़ा मशकूक तरीके से देख रही थी और फिर वो मुझसे पूछती है वो लड़की कौन थी. okay? अच्छा, obviously in these families एक फोन होता है स्मार्टफोन which the kids and family uses as well, right? Not very मतलब underprivileged, right? तो essentially उनके किसी दोस्त ने एक शरारत की थी कि they had gone somewhere and he put a lady next to him, very close to him, uncomfortably close to him, and had sent it to him. He didn't know. तो वो तो शुक्र है उनका ट्रैक रिकॉर्ड साफ था, so he didn't get into much trouble because of that. Okay, but the point is this is gonna happen all around us. अगर मैं इसको थोड़ा सा organizational touch दूं, so imagine you get a harassment case. You get a harassment case with a very uncomfortable sort of a video or photos that come out. If you're not aware of this, आपका immediate reaction क्या होगा? If it looks very genuine, trust me, you will not be able to tell. अब जो मॉडल्स आ रहे हैं, you will not be able to tell कि ये AI generated है या real है. तो are you aware of that? Are you ready for it? We are not, because we are not thinking of it. Individual level पे, societal level पे, खुदा ना खास्ता, there are 2 other risks that you need to be aware of. आपको याद है कुछ अर्से पहले unfortunately extortion calls started. किसी के पास आती हैं, don't keep the phone बेटा. Imagine when you start seeing horrific videos and videos of loved ones and them saying that they are in this position, immediately wire the money. I don't know कि इन चीज़ों का solution क्या है. I do not have all the answers myself right now, right? क्योंकि बहुत सारे ऐसे फितने हैं जिनमें हम भी दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला आफियत का मामला रखे. These are a bit scary things, right? But from your organizational perspective, let's say a client sends a video और वो उसमें आपके जो डिलीवरी था या आपका सेल्समैन था उसकी कैश हैंडलिंग दिखा देता है. आप एक्शन लेंगे नहीं लेंगे? व्हाट इज योर ऑल्टरनेटिव वे ऑफ वेरीफाइंग? हैव यू इवन डिस्कस दैट इन द ऑर्गेनाइजेशन? ये आएगा. दिस इज गोना स्टार्ट हैपनिंग, राइट? सो व्हाट आई वुड रेकमेंड इज द फर्स्ट स्टेप इज बीइंग अवेयर ऑफ दीज रिस्क्स एंड देन वी मूव टुवर्ड्स रिस्क मिटिगेशन, राइट? सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्प्रेड. ऑब्वियसली व्हेन वी एंगेज in a certain environment, we have more discussions about how to mitigate these risks. But this is about at least spreading risk awareness that AI is here and it has massive opportunities but massive risks as well. So when you think about public figures, religious figures, unki alag-alag kisam ki videos aayenge, how would you tell right from wrong, etc., right? So just be aware of these things and try and find ways to mitigate this. Chale, next chalte hain. So basically, since you're spending a bit of time with me, so obviously I wanted to give you something to take away as well, which would help most of you, if not all of you, आपकी अपनी AI usage improve करने में, ठीक है? तो if I may ask you, how many people here have done any structured course on prompting or AI usage? A couple of people. और किसी ने नहीं किया prompting पे? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब आप अपना ChatGPT या Gemini या Copilot यूज करते हैं, आप कभी AI मॉडल को कोई रोल इख्तियार करने को कहते हैं कि प्लीज अडॉप्ट दिस रोल? इफ यू डू, वेरी गुड. इफ यू डोंट, प्लीज टेक दैट एज वन टेक अवे, दैट दिस इज वन स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉम्प्टिंग
a basic good structure of prompting which I want you to take away. Okay, so please make sure कि जब आप AI से कोई काम करवाएं तो उसको जरूर बताएं कि ये रोल में एक्ट करो. मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको. Act as a talent recruitment analyst working for an FMCG organization in Pakistan, for a medium-sized FMCG organization in Pakistan. उसको context दें. We are hiring for fala fala position. I want you to draft the JD for me, for example, right? Or draft the ad for me, and the output should be this is what I'm going to post on LinkedIn on a one-pager. ये एक example है. This is not advanced prompting. This is basic good prompting. Okay, so I would request कि अगर आप लोग ये नहीं करते, coming from someone who uses AI all the time and a reasonable level of expertise, I would like to say, बहुत फर्क पड़ता है आपके outputs पे when you go towards structured prompting. If you want to go deeper into prompting, Gemini, Google, OpenAI, Microsoft, Claude, सबके free courses available हैं. Please spend more time. बहुत फर्क पड़ेगा. Number 2, prompt engineering से भी ज़्यादा important है context engineering. Prompt engineering, so your results, उन पे कहीं ज़्यादा फर्क पड़ता है context engineering का as opposed to prompt engineering. आप में से कितने लोग चैट जीपीटी में प्रोजेक्ट्स यूज करते हैं? 3-4 पीपल. गुड. बाकी नहीं करते. दिस इज वेरी सिमिलर. प्रोजेक्ट्स का जो फीचर था, दिस वाज मेड अवेलेबल टू फ्री यूजर्स ओनली अबाउट 2 months ago. उससे पहले सिर्फ पेड यूजर्स को अवेलेबल होता था. इट्स अ गेम चेंजर फॉर हाउ यू यूज योर चैट जीपीटी. आप मुख्तलिफ काम करते हैं. उन कामों में अगर आप नोट करेंगे, आपके पास लेफ्ट पे एक पूरी लिस्ट होती है चैट जीपीटी के चैट्स की. जब आप एक नया काम शुरू करते हैं तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि अपना किबला दुरुस्त कर लेना. एंड यू आर गिविंग इट अ टफ टास्क टू गेट द राइट कॉन्टेक्स्ट. कुछ आप बता देंगे, बट व्हाई डू यू हैव टू से इट आउट ईच टाइम? अगर एक प्रोजेक्ट आप बना देते हैं, प्लीज एक्सप्लोर विद इट एंड you'll रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट. एक प्रोजेक्ट बना दें, उस प्रोजेक्ट में उस जैसी पिछली चैट्स जो आपने रेपिटेटिव नेचर के काम किए हैं वो आप वहां पे ऐड कर दें. एंड देन यू सी व्हाट डिफरेंस इट मेक्स व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू चैट विद इन द प्रोजेक्ट एज अपोज टू आउटसाइड द प्रोजेक्ट. सो you'll start realizing कि जो हमारा AI यूजेज है, उसकी एफिशिएंसी, उसके जो एक्यूरेसी ऑफ आउटपुट्स हैं, दे गो अप मल्टीफोल्ड when you start using projects. So obviously, because we're spending this time together, I wanted to give you a couple of tips which will help you improve your own AI usage. ठीक है? अच्छा, कस्टम जीपीटीज का खैर वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट राइट नाउ. एक चीज पे बात कर लेते हैं हम लोग. मैं यार ये माइक का वो कर लीजिएगा. अच्छा देखिए, ऑब्वियसली आप सबसे एक बात हो रही थी बिफोर वी स्टार्टेड द सेशन. वी वर सेइंग ऑल ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग कि एआई का मोमेंटम बिल्ड कैसे करें इन योर ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? आई थिंक वी आर ऑल. And obviously, जहां मैं गया हूं, that's the number one question the HR teams are asking, the leadership teams are asking. तो मेरे साथ मेरा असिस्टेंट भी साथ जाता है, तो उससे पूछ लेते हैं. आई होप इंटरनेट साथ दे. 1 मिनट रुकिएगा जी. अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं ठीक हूँ और मुझे लगता है आपका सेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा. बताइए, मैं आपकी और ऑडियंस की किस तरह मदद कर सकता हूँ? यार, ऑडियंस से जानना चाह रही है कि पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां हम गए हैं, व्हाई आर मोस्ट ऑफ दोज स्ट्रगलिंग टू गेट स्टार्टेड विद देयर एआई मोमेंटम? हाँ बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ कि ऑडियंस के लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल है. देखिए, जो हमने देखा है पाकिस्तान में वो ये है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के पास अभी तक एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं है. मतलब उन्होंने ट्रेनिंग या कैपेबिलिटी बिल्डिंग पर इन्वेस्ट नहीं किया या लीडरशिप का प्रॉपर बाय नहीं, इसलिए वो मोमेंटम बिल्ड करना मुश्किल समझते हैं. सो बेसिकली थोड़ा स्ट्रक्चर और लीडरशिप का साथ होना बहुत जरूरी है, तभी वो एआई जर्नी को आसानी से शुरू कर सकते हैं. इसके अलावा और रीजंस, द अदर टॉप 3-4 रीजंस? हाँ बिल्कुल, कुछ और रीजंस भी हैं, जैसे कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नेंस या डेटा सिक्योरिटी का डर होता है, इसलिए वो हेजिटेंट रहते हैं. फिर लीडरशिप की तरफ से क्लियर ओनरशिप ना हो तो सब लोग एक पेज पर नहीं आते. इसके अलावा लोग इसे सिर्फ एक आईपी प्रोजेक्ट समझ लेते हैं, जबकि ये एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन होती है. तो बेसिकली स्ट्रक्चर, लीडरशिप आयन और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना जरूरी है. ये सब चीजें मिलकर मोमेंटम बनाने में मदद करती है. थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज.
खुदा हाफिज और उम्मीद है सेशन आपका बहुत ठीक है भाई. So actually बात ये है कि obviously that is just using your model much better when you've personalized it and customized it. So it's always on point. It knows the context obviously, and this is one of the ways to improve your AI usage. What I wanted to say was कि AI क्यों नहीं चल पा रहा कंपनीज के अंदर. A big part of that is because it's being treated as an IT project as opposed to a proper transformation. And जब आप उसको एक साइट का IT project एक specific consider करेंगे तो वो वैसे ही रहेगा. The ownership buy-in is important. Your capability building is important. Governance के around कुछ चीजें होना and data privacy के around जो concerns है. So all of these need to be addressed. So मेरी request है as the HR fraternity, please try and push for treating AI as a full-fledged transformation project, which means आपको एक successful transformation के सारे pillars in place रखने होंगे. That includes the push and the pull factors, reward mechanism, ownership from the top, constant reiteration, etc. तो जब भी आपने कोई भी transformation run किया, be it innovation or various other change management initiatives over the years, तो you know कि successful or unsuccessful transformations में there are these differences. Make sure you treat it as a full transformation. Okay, I cannot emphasize on this enough. I did that at ICI with their innovation transformation as well, and I know each of these pillars are really important to help build an AI first culture. एक चीज, and I think we're closer to wrapping up as well, but one thing that I would cover is जो बहुत सारे लोग अभी AI solutions में फंसे हुए हैं अभी तक, they are not fully being able to envisage the types of AI solutions in front of you. Okay, from the simplest to the more complex. तो जब आप कहते हैं कि यार किस तरीके से सॉल्व करना है, तो the very simplest bit is better use of your chat GPTs and Geminis. ये सबसे simplest है, with better prompting, better context. Number 2, off the shelf AI tools. Research के लिए कौन सा बेस्ट है, वीडियो क्रिएशन के लिए, presentation design के लिए, audio, creatives, etc. These are off the shelf tools. Number 3, creating simple AI agents जैसे custom GPTs वगैरह जो कि आपकी teams खुद enable हो सकती हैं and they can make a lot of those. Number 4, no code automations, right? Make.com, Zapier, NA10. That is number 4 as far as complexity is concerned. Then you get to the more advanced type of AI solutions जहां पे आप most probably internal capability नहीं है, so you'll need external capability to develop tailored AI solutions and agentic systems for your organization. This is more on the complex side. Then you're talking about enterprise level AI integrations. So your SAP Joule लेके आ रहा है, Salesforce has got its own system. इसी तरह success factor के अंदर AI आ जाएगा, etc. etc. And then this is talking about a full custom AI platform, जो कि जैसे अभी बात हो रही थी भाई से फैसल बैंक में, आपका नाम सर फुरकान भाई बता रहे थे, with banks or many, in fact what you will realize is many business owners are saying they are aiming directly for this. वो कह रहे हैं हमारा सारा data एक जगह ले आओ and we want to ask all the questions from it. That's not the easiest one. Let that come later. उससे पहले बहुत सारे low hanging fruit हैं. There are a lot of things that can be done to build the AI momentum, and in fact the playbooks from the West in terms of AI implementation are emphasizing this fact कि start with low hanging fruit. Start with low hanging fruit, go for quick wins, build the momentum, and then go towards the more advanced solutions, जो कि कुछ लोग गलत कर देते हैं and they go for the most fanciest thing here. ना उनको सही बंदे मिल रहे हैं डेवलप करने वाले, costs are outrageous. Bloomberg की एक एग्जांपल है, Bloomberg ने $1 million से ऊपर खर्च किए to develop its own chatbot. ChatGPT 5 आया and it could do a better job than what they built with the previous model available to them. So don't go for this just yet. उससे पहले भी एक पूरी दुनिया मौजूद है, go for that basically, right? And obviously that's where अगर आप roadmap पूछते हैं, it has to start with awareness. There's no two ways about it. फिर आप use cases explore करें, governance and guardrails build करें, जिसका step 1 है sending a good nice email saying कि please be responsible around your AI usage, sensitive data exposure, etc. etc. वो करें, and then you get beyond, फिर आप पूरी full fledged integration and scaling की तरफ जाते हैं. इसमें सब क्लियर है जी. ये रोड मैप जो है दिस अप्लाइज बिकॉज आप लोग अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में एचआर फ्रेटर्निटी से हैं, जनरली सब एचआर से हैं यहाँ पे. एनीवन फ्रॉम नॉन एचआर? आप किस फंक्शन से हैं? इंजीनियरिंग. एंड आप सर?
Engineering, same. And how about you? Which you're from? Yeah, most people are from HR, right? So the point is, HR is being tasked by their CEOs to get going with building this, but they're struggling. So what I'm recommending is start with awareness, start somehow get your leadership to sit in a room for a day or 2 days and talk about AI. You cannot imagine कितने अलग अलग मसले हैं, कोई कहीं फंसा हुआ है, किसी के जहन में कोई skepticism है, unless everyone sits there, they all come on the same page, ये momentum build नहीं होगा. And you can tell that to your leaderships as well. It will not happen without them dedicating some time and building the buy-in from the top. So get your leadership teams in one place. Then you can obviously go towards workshops for middle management, right? Or obviously जिस तरह champions build करते हैं किसी चीज के लिए catalyst, अलग अलग नाम लोग करते हैं, but I mean to drive this transformation, right? And then you can get into function specific workshops as well. ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है. इसको अगर आप में से कुछ लोगों ने लीन वर्कशॉप्स की हैं, लीन सिक्स सिग्मा, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट या डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप्स, दीज कम इन वेरी हैंडी फॉर एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग. आप फर्क समझिएगा, बिकॉज दिस इज व्हेन अ टीम सिट्स डाउन एंड आप अपनी पूरी प्रॉब्लम्स विजुअलाइज करते हैं, and then you try and find solutions using AI for those, and those could be a variety of solutions, right? So uske alawa you can obviously do all sorts of different things, competitions, awareness seminars. So I think this is really really important. Please कोशिश कीजिएगा कि इसको follow करें. अच्छा, हम लोग अभी जब ये सेशन कर रहे थे, वीडियो चला दिएगा, अभी हम ये सेशन कर ही रहे थे तो मेरे ख्याल में मशहूर हो गया. We're live tracking AI developments globally, and right now, all eyes are on Karachi. The CONNEX conference is underway, and the energy around AI here is unbelievable. Yeah, watching the feeds as they come in. Multiple AI sessions running back-to-back packed rooms. But the one happening right now is getting the most attention. You're talking about Fahad Jilanee's session? Exactly. He's walking the corporate sector through responsible AI enablement in a way that's unusually clear and practical. We're seeing executives share clips and quotes in real time. What strikes me is how he's simplifying the complexity, helping organizations understand the risks, guardrails, and the smartest path forward instead of just chasing hype. And honestly, if the momentum we're seeing on the live updates continues, this could be a real inflection point for Pakistan's corporate ecosystem. Totally. Big things happening in Karachi today. We'll keep monitoring the session. Stay tuned for more live coverage. देखिए जी, आप सब मशहूर हो गए, हमारा सेशन जो है. But the point is, this is the sort of things using AI. Obviously, जो चीज़ें हम लोगों को external जाना होता है, there's so many internal training modules, external content, etc. Right? It takes me 15 minutes to build this now, right? So obviously, just wanted to sort of give that as an idea. Please get in touch if you need any help on your AI adoption journey. All the best, and I hope you found that useful. Thank you. Right, thank you, Fahad. Thank you very much for wonderful discussion. हम आपकी AI के I don't know, आपके assistants को तो नहीं दे सकते token of appreciation, but आपको जरूर दे सकते हैं. Thank you very much, audience. Thank you very much. I hope it was a lovely session. Before you go, Salim, I would like to invite Ivo to present the token of appreciation to Fahad. तालियां और It was inspirational. Thank you. And emotional. My And pleasure. as we say, to be continued. Absolutely. Thank you. So My much. pleasure. And Yeah. एक और लेने इस तरह सामने. came halfway through, Thank but it you. was fantastic. No, thank you. My pleasure. My pleasure. Thanks. Thanks. Thank you. Thank you.